Okay, hello everyone. कुछ देर में शुरू करते हैं. We'll just start in few minutes. Okay, just give me a few minutes. I'm just setting up the camera and then we'll start. Let me get my cameraman. Okay, everything is set up. Just one more minute. Cool. I'm gonna do this. Okay, we got light here. More of this. Okay, so enough light is coming right now. Hello. So let's just get started. So we are gonna go live. There you go. Okay, so we are live. Just give me hello. Okay, so the music has been reduced and seems like we are good to go. Just let me hear the stream one more time and then we'll start with our analysis, top-down analysis, and then we'll do our daily top-down session. Okay, so thank you everyone for showing up if you have right now. ओके, थोड़ा म्यूजिक और बढ़ा लेते हैं. You know what, 35 में रखते हैं. That will 35 will be too much. 40 will be good enough. Hello. Hello. Okay, so seems like everything is good. Everything is good to go. Hello. Hey, what's up, Ansh? How are you? Thank you for showing up. Okay. All right, so let's get started. We will start with our top-down analysis. First of all, we are looking at Euro USD right now. Let's just start with week. सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं है आज. Okay, so we'll select today and we have nothing but GBP news at 11:30 PM, जो कि काफ़ी रात के समय है, तो I don't think it matter as much. Okay, तो yeah.
So just give me a minute and we'll start the top down analysis. Hello, hello. Yeah, it's all about lighting, I guess. Yeah, it's all about lighting, I guess. It's all about lighting, I guess. Okay, Baki audio is good. We are good to go. Just let me know. Yeah, all right. Okay, so it's time to start. तो ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम गोल्ड देखोगे, आई डोंट नो व्हाई मैं गोल्ड के चार्ट में, तो चलो इसे ब्रेक डाउन कर ही देते हैं. तो gold you will see on weekly market seems to be bearish, and I think we are pretty much bearish till this point right here, and we have created most recent resistance right here. इसे further break down करेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो you will see on daily we have created this resistance right there and we are falling ever since. Okay, इसे further break down करेंगे 4 घंटे में, so you will see we have created some kind of resistance right there, and then we have a support forming right there. Overall market seems to be bearish, तो अगर गोल्ड में मुझे ट्रेड करना है तो I'll be just looking for bearish. Okay, so first of all you will see we have on 1 hour chart we have this resistance right there, we have made the support right there. इसे further break down करेंगे and we will get this simple. Okay, and we have formed a most recent resistance right there. So this is my range. I'm looking for buy above this, looking for sell below this, and this right here will be my zone of interest. There you go. So strategy is simple. Gold may, if we see a breakout above this and we see a test of this level, we'll go for buy. And for sell side, if I see something like this, it will be a good sell. ठीक है. और अगर थोड़ा और कंजर्वेटिव होना चाहते हो, जस्ट लुक फॉर ब्रेक ऑफ दिस लेवल राइट देयर. सो दिस इज़ अ सिंपल एनालिसिस ऑन गोल्ड. वैसे तो हम गोल्ड ट्रेड नहीं करते इस समय पे, बट या अगर कोई सेटअप दिखता है तो विल सी. ऑन यूरो एसडी अगेन आवर फेवरेट पेयर, लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन. तो फ्राइडे के दिन हमने एनालिसिस किया था, बट हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं मिली थी. वी वर लुकिंग फॉर सेल बिलो दिस. इफ़ यू remember our analysis, what I wanted to happen here, this कि ये वाला लो अगर ब्रेक होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर लाइक सेल सेटअप्स, बट अगेन हमें कुछ मिला नहीं. तो ये वाली ट्रेड मिस हो गई. उसके बाद राइट नाउ वी कैन गो फॉर बाय बिकॉज दिस एरिया हैज जस्ट बीन ब्रोकन. वी कैन गो फॉर बाय इमीडिएटली, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर आवर एनालिसिस टू ओवर. तो अगेन डेली से शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल ऑफ दिस लेवल्स एंड ऑन वीकली वी विल सी कि मार्केट हैज़ टेस्टेड दिस. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट है वो है ठीक यहाँ पे ऑन डेली राइट हेयर, राइट हेयर. ओके, एंड ऑन वीकली वी हैव दिस रेजिस्टेंस राइट देयर. ऑन डेली यहाँ पर हम देखेंगे तो वी व्हाट वी सी राइट नाउ इज़ लाइक resistance right here and market has created some kind of support right there. इसे further breakdown के करेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो you will see कि market seems to be bullish on 4 hour, but on daily market is seems like bullish as well. On weekly market seems again bullish because market has like taken support right there, and which can be good but it can be quite deceiving as well. On daily you will see we have created kind of 1 2 3 4 and this is fifth candle today which is going absolutely bullish. पर अगर देखा जाए तो डेली में we have this our
hit zone kind of on daily extend support. Okay, so this can be a good resistance to sell on euro USD, but again this is like really up, तो आई एम लुकिंग फॉर बाय. इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो यहाँ थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती है. ठीक है, डेली में इट सीम्स लाइक बुलिश. ऑन 4 आवर you will see कि market has created some kind of resistance right there. Okay, and we have some kind of support right there. इसे further break down करेंगे 1 घंटे के चार्ट में, and इसको एडजस्ट करने पे हमें मिलेगा एक ये वाला लेवल एंड एक मिलेगा ठीक ये वाला लेवल. ओके, एंड राइट नाउ वी आर बीइंग सपोर्टिव एट दिस पॉइंट राइट देयर. ठीक है, ऐसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 30 मिनट के चार्ट में. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे सेशंस की लाइन है इसे मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लूँगा. there you go there you go. So what we are seeing right now is on 4 hour market seems to be bullish, on daily market seems to be bullish. So it seems like buying euro today will be a good idea. ठीक है, सेल के लिए तो हम यूरो नहीं देखने वाले आज, तो लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन फर्दर. तो दिस इज़ माय somewhat of a resistance right here, but I don't think so अगर because trend buy में है तो I don't think ये hold भी करेगा. It can be broken like easily. Okay, and we have this sell below level right here. इसे and the range in between is our no trade range. there you go. इससे further break down करेंगे and mark कर लेंगे. This right here is my sell below level and this right here is my buy level, buyable level. ठीक है, तो इसे अगर सी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पे राइट हियर. सी ऑन 30 मिनट चार्ट यू विल सी मार्केट हैज़ बिन बुलिश ऑन दिस कैंडल राइट हियर बिफोर द मार्केट हैज़ ओपन like on pre-London, and right now we are at like pre-London. So we have created this some kind of resistance right here on 15-minute chart right there. ठीक है, तो on a positive note what I want to see on 15-minute chart is that break of this level, test of this level and the further up. This is my ideal scenario for today. So yeah, this is what I'm looking for today on buying side. For sell side what I want to happen is कि if this area breaks, ठीक है, if this area breaks and test we will be looking for further sells. Okay, so this is a simple analysis of euro USD for euro USD आज के लिए. ठीक है, तो इसे अब वैसे आज मंडे तो वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्किंग एज मच एज वी रिस्क ऑन अदर डेज. तो जल्दी जल्दी अपना जो अपना ट्रेड राइट अप है वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज़ वेट फॉर सेटअप टू कम. ओके, so if you are watching the stream right now please consider liking the stream. It keeps me motivated to do this stream every day, and please subscribe to the channel because it is helping our community to grow. Okay, so all the 3 people watching right now please consider liking the stream. ओके, तो जल्दी से ट्रेड राइट अप कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि आज क्या न्यूज़ है जो हमने देखा था, एंड देयर इज़ नो न्यूज़ टुडे. आज जापान का हॉलीडे है, तो मेक श्योर कि तुम यूएसडी जेपीवाई ट्रेड ना करो एंड कोई भी जापानीज़ पेयर ट्रेड ना करो अंटिल शाम नहीं हो जाती. उसके बाद अगेन जीबीपी की स्पीच है, यूएसडी की काइंड ऑफ स्पीच है 10:30 बजे रात को, ये सब रात में, तो आई डोंट थिंक दैट मैटर्स एज वेल. उसके बाद टुमारो वी हैव सीपीआई, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है हमारे थर्सडे के दिन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पीपीआई है हमारी फ्राइडे के दिन. तो आज तो कुछ नहीं है, तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट राइट नाउ इज नन. देयर यू गो, सिंपल. ओके, तो उसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डेली के चार्ट में. तो डेली वाज बुलिश. ओके, डेली वाज बुलिश एंड सीम्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स 8980. तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा and seems to be going towards 8980. ठीक है, दैट इज़ 1.09 सॉरी 1.08 980. ठीक है, व्हाट आई राइट डाउन बेसिकली कि मार्केट हैज़ बिन बुलिश रिसेंटली, द डे वाज बुलिश एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस लेवल राइट देयर.
तो ये मैंने डेली पे लिखा है। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। ऑन H4 मार्केट सिम्स टू बी बुलिश, तो मैं यहीं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना जस्ट डिलीट ऑल दिस, देयर यू गो। यहाँ से हम शुरू करेंगे। इन H4 मार्केट seems to be bullish. ओके, एंड शायद तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं मे बी एंड मे बी सीम्स इस तरह के वर्ड काफ़ी यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये एक ये बेसिकली इसलिए मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज मार्केट में कुछ भी सर्टन नहीं है, एज वी नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड नथिंग इज़ सर्टन, एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ लाइक मे बी सीम्स लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज हमें जो हमारा एनालिसिस है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होता है, एंड जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है वहाँ पे हमें रिजिड होना होता है, ताकि वी कैन मेक एज मच मनी एज पॉसिबल विदाउट लूजिंग मच कैपिटल इन द प्रोसेस। ओके, तो ओके, तो ऑन H4 मार्केट सिम्स टू बी बुलिश। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे 1 घंटे के चार्ट में, तो यू विल सी कि इन एशिया सेशन वी हैव क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस एट 7989, तो मैं उसे ही लिख लूँगा। There you go, there you go, there you go, there you go. Okay, market has created a high at Asia at 7989. Okay, and we also have created good support at this level right here, 7902, basically this at 7902। ओके, तो ये मैंने लेवल मेंशन कर दिया है। उसके बाद मार्केट हैज़ टेकन अ सपोर्ट राइट देयर एंड वी क्रिएटेड सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एट दिस प्राइस राइट हियर 7942, तो ये भी मैं मेंशन कर लूँगा। तो व्हाट वी डिड राइट नाउ एट दिस टू we created support here, we created support here and made a minor resistance at this level right here, which is 7942, at 7942। okay, so basically break and test of this level shall push the price up uh, for at least 20 pip। ठीक है, at least 20 pip। we also have a support at 7902, like this one right here, जहाँ पर प्राइस है अभी ये जो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 7902, if this breaks and test I shall be selling for about 20 F. Okay, so this is our simple analysis for today. To conclude I'm looking for break and test of this level right there, which is about 7942, I'm looking for break and test of 7942 for to take buy for about 20। there you go। ठीक है, एंड इन केस ये ब्रेक नहीं होता एंड ये ब्रेक होता है एंड ब्रेक एंड टेस्ट होता है तो आई लुक फॉर सेल। तो दिस इज आवर सिंपल कंक्लूजन फॉर टुडे। इसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, कंक्लूजन में लुकिंग फॉर बाय इफ दिस एरिया राइट हियर विच इज 7942 ब्रेक्स एंड टेस्ट, 7942 ब्रेक्स एंड टेस्ट बेसिकली। तो हमारा सेटअप टाइप हो जाएगा टेस्टिंग सपोर्ट एंड
ब्रेक ऑफ प्रीवियस कैंडल हो जाएगा अपना ट्रिगर पॉइंट. पोजीशन साइज आई एम रिस्किंग टुडे 0.5%. एंड अगेन बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, डू यू फुल्ली एक्सेप्ट द रिस्क इन दिस करंट ट्रेड. करंट ट्रेड मतलब अगर तुम एक पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो एंड अगर उसका स्टॉप लॉस होता है तो तुम्हारा जो साइकोलॉजी है उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके. उसके बाद हमारे जो रूल्स हैं मार्केट के, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. बेसिकली कोई भी ट्रेड का एक फिक्स आउटकम नहीं होता. एक एक पोजीशन को एंटर करने के बाद उसका प्रॉफिट में जाने का चांस भी 50% होता है एंड उसके लॉस होने का चांस भी 50% होता है. तो मार्केट इज़ वर्क इन प्रोबेबिलिटीज़. अगर एक इनफ गिवन सैम्पल साइज है और अपन एक राइट साइड ऑफ द एज है तभी हम मार्केट में सक्सीड हो सकते हैं. ओके. उसके बाद अगेन द मोर यू लूज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इज इंक्रीजेस. तो बेसिकली जितना तुम मार्केट में अगर तुम एक लूजिंग स्ट्रीक में हो और तुम अपना मनी मैनेजमेंट पॉइंट में रख रहे हो तो इवेंचुअली यू विल विन. इवेंचुअली तुम्हारी विन स्ट्रीक भी आएगी. तो मेक श्योर अबाउट दैट. एंड उसके बाद अगेन हमें अगर प्री लंडन मार्केट में अगर सेटअप नहीं मिलता तो हमें लंदन में सेटअप मिलेगा. एंड अगर लंदन में सेटअप नहीं मिलता तो हमें पोस्ट लंदन में सेटअप मिलेगा. एंड अगर पोस्ट लंदन में सेटअप नहीं मिलता तो हमें प्री एनवाई में सेटअप मिलेगा. और अगर प्री एनवाई में सेटअप नहीं मिला तो वी विल गेट अ सेटअप एट पोस्ट न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क ओपन में. ओके. तो दैट इज़ आर सिंपल ट्रेडिंग राइट अप फॉर टुडे. साइजिंग नोट कार्ड देख लेते हैं. अगर मुझे ए प्लस ट्रेड मिलती है तो आई एम गोइंग टू बी रिस्किंग अबाउट 1%. एंड अगर मुझे एक ए ट्रेड मिलती है जो कि यूजुअली हमें मिलती है तो आई विल बी रिस्किंग अबाउट 0.5%. ओके. एंड या एंड हमारी जो डेली रिस्क लिमिट है वो है 2% की. मतलब कि अगर 2% के आगे रिस्क होता है तो वी विल जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग फॉर टुडे. ओके. So there you go. This is our simple analysis for today. And make sure to manage your risk. And अगर कोई भी क्वेश्चन है तुम्हारे मन में या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, you can just directly ask me. I'm live till 3 p.m. today. Okay. So there you go. Our simple top-down analysis for today. And now let's just see what question you guys can ask. There you go. इसे अगर सिंपल एरो के फॉर्म में दिखाना हो तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ लाइक this for buy side. This is my primary bias for today. Basically I'm looking for a buy above this level. Okay, simple. And for sell side what I want to happen is something like this. ठीक है. तो on the both direction we are looking for break and test. Basically we are looking for two setup, testing support or testing resistance for today. So that is it for our top analysis today. अगर कोई भी क्वेश्चन आता है you can directly ask me and I will try to answer that. And if we see a breakout about this, we will mark our hit zone and we'll try to execute that trade. Hello Ansh, hello Chickpea, how are you? Okay, so as you see market has just grabbed liquidity from here and right now we are getting a like some kind of breakout, but I won't be entering this breakout immediately. Let's just say कि this will become my hit zone right here. This will become my hit zone right there. And what I want to happen कि market shall come down some kind of this and then we will be interested in taking buys. Okay, this is what we want to happen right now. But this is impulsive entry. I won't be entering this trade because again we can arguably enter this trade because market is bullish. And if you wanna enter this trade you can with around 0.5% of the risk. But I'm just going to be waiting right now. So let's just see what happens, at least for this candle to close. Okay. And thank you everyone whoever shows up to my stream. Well, arguably एक trade ली जा सकती है if you wanna go for impulse entry, but the target will be like really smaller. Let's just open the fib and this will be our target right here. See right here. So if you wanna take an impulse entry you can, and SL will be somewhere right here. SL will be, the risk to reward ratio is just too off in this trade, so I don't think it is worth it to take this trade right now. But
If you want to take risk, you can, but I'm not going to be entering this trade. I'll rather wait for some kind of pullback to happen, as we stated in our trade writer. Okay, so yeah, that is it. Basically, this will be our target for today. So that is it basically for our top down analysis. And अभी का जो प्लान है वो सिंपल है, जैसे कि हमने हमारे ट्रेड राइटअप पे लिखा था. व्हाट आई वांट टू हैपन इज सम काइंड ऑफ पुल बैक टू हैपन, एंड इफ दिस एरिया टेस्टेड आई विल बी एंटरिंग दिस ट्रेड इमीडिएटली, एंड देन वी विल लुक फॉर बाय. तो दैट इज़ आवर टॉप एनालिसिस. ओके, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी, या अगर तुम चाहते हो कि मैं कोई पेयर को एनालाइज करो तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर तुम्हें चार्ट भेजना है तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि किस तरह से तुम मुझे चार्ट्स भेज सकते हो टू एनालाइज. एंड या, दैट इज़ इट. एंड राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू बी वेटिंग फॉर अ सेटअप टू अकर. या, आई टोटली अग्री विथ यू अंश. रिसेंटली मुझे एक हार्ड कॉपी मिली है ट्रेडिंग इन द जोन की. सी, देयर यू गो. वैसे तो मैं सिर्फ मोबाइल में रीड कर रहा हूँ आजकल, बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस बुक. आई एम गुड, चिकपी, हाउ आर यू? And the book is totally a game changer because it like teaches you ki how do you actually think like a professional trader. And because मेरी वो book complete हो गई है, I started reading today best loser wins. आज ही मैंने पढ़ना शुरू किया है वो. तो let's just see उसमें कितनी वैल्यू है फॉर अ ट्रेडर. ओके, तो बेसिकली अपना जो एम होता है वो है टू इम्प्रूव एज अ ट्रेडर एवरी डे. तो मेक श्योर टू रीड एटलीस्ट 5 pages एवरी डे ऑफ एनी ट्रेडिंग बुक यू वांट टू. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Okay, so I'll be live till 5, let's just say 2:30 or 3 max. Okay, तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो. एंड या, होपफुली अपना जो ऑडियो वाला इशू है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है. एंड होपफुली तो मेरी आवाज़ ठीक तरह से आ रही है विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ like disturbance or something. Okay, so as you can see, market seems to be really bullish. We have volume. Again, this is still, yeah, sure, we'll do that. Okay, तो market open होने के बाद we see some kind of like a lot of volume has come, and because this candle is really violent, it will be like wise to just wait for this candle to close, which is in about 2 minutes, and some kind of pullback to anticipate. Basically, again, जैसे कि मैंने कहा, we can take a buy immediately, but this will be too risky as our stop loss will be too huge. But if you are in a trade, make sure to take profit somewhere around this level, 80 something. This will be a wise decision. Okay. तो so far इस मंथ पे हमने 4 ट्रेड किए हैं, and 4 of them were winners, and we are yet to take a loss. तो let's just see कि आज हमें कोई लूजिंग ट्रेड मिलती है क्या. होपफुली ना मिले, but again this is all about perspective. The more you win, probability of you getting a losing trade increases, and the more you lose, probability of you winning a trade increases. So make sure कि you know your edge. Okay, so far there is nothing to do today. Again, we are waiting for some kind of pullback to happen.
On gold, you will see कि market seems to be bearish on daily, on bearish on 4 hour as well. So उस लॉजिक से देखा जाए तो what I think कि gold, there you go. So basically, what can happen right now is either this can break and test and go for buy, or uh, it can test this level right here, which is 2020. So right now, again, there is no trade on gold as well. We Okay, see, you see how these candles are all red and like really aggressive. This is a good chance कि market is sell. Market is going towards bearish, and अगर इसे हम देखें तो बेसिकली अगर मुझे गोल्ड अभी ट्रेड करना हो तो आई विल बी वेटिंग फॉर दिस कैंडल टू क्लोज. अगर ये कैंडल क्लोज होती है, क्लोज होने के बाद आई बी लुकिंग फॉर bearish setup on gold. So gold doesn't seems to give any value right now on USD as well. Okay, see, USD candle has been closed and we are seeing a good breakout right here, just like we thought we will see. So right now what I want to happen is some kind of pullback to come, and अगर pullback होता है तो then we'll be interested in taking a buy, and this will be our testing support setup, which is our A setup, and we'll be risking about 0.05% on this trade. Okay. So if there is any more question, you can just ask me, and then we'll see what we can do for today. Okay. Last week was pretty good, but last week में हमारी दो ट्रेडें मिस हुई थी. If you watch me regularly, you will see कि which trades were those. Basically एक तो इसलिए मिस हो गई थी because it was really odd timing. It was around 4 o'clock, चूँकि हमारा ट्रेड करने का टाइम नहीं होता, तो तब एक ट्रेड मिस हुई थी. एंड द अदर ट्रेड वाज ऑन गोल्ड, जो कि शाम के समय मिस हुई थी बिकॉज आई वाज जस्ट टू हेजिडेंट टू टेक दैट लॉस, जो कि बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इशू था, जो कि नहीं होना चाहिए था. तो दीज वर द ट्रेड्स वी मिस्ड. ओके. ओके, किसी ने रिसेंटली वो ध्रुव राठी वाला वीडियो देखा है विच इज़ अबाउट myopia and shit? So I think I have myopia, so that's why I got my shades on. And yeah. Yeah, man. It's like नर्ड दिखना चलता है बट नज़रें कमज़ोर नहीं होना चाहिए. Yeah, I guess it looks somewhat okay. Okay, so far there is no trades today. We will be just waiting for some kind of setup to occur. हेलो हेलो एंड अगेन गाइज, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क मी ऑन द लाइव चैट एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट.
Yeah, seems like four people watching us right now. So please make sure to like the stream. Should I reread this on stream? Like, let me know. Agar if you wanna if you wanna see me read this, we can read this right now. I'm not sure if I can move to Gurgaon. Okay, so let's just read this. This is our book, Trading in the Zone. Mark Douglas ने लिखी है. तो आई एम गोइंग टू बी रीडिंग दिस. चैप्टर 1 से शुरू करते हैं. ये बुक मैं अराउंड 2 बार रीड कर चुका हूँ, बट just because we are live on the stream and there is nothing much to do, just to wait, we will read this. Okay. तो if you see market, अगर तुम देख सकते हो तो we got like a clear breakout, but market seems to be pulling back to our hit zone. And again देखते हैं इस hit zone में किस तरह से behave करता है market, and then we will be either taking a buy or sell. Okay, so all we have to do right now is to wait. Okay, so I think we are going to read uh, again Trading in the Zone. मैं chapter 1 से शुरू करता हूँ वापस. And we are on page number 1. The chapter का नाम है The Road to Success, Fundamental, Technical or Mental Analysis. Okay, in the beginning, तो first line से शुरू करता है. In the beginning, fundamental analysis. Who remember when fundamental analysis was considered the only real or proper way to make trading decisions? When I started trading in 1978, technical analysis was used by only a handful of traders who were considered by the rest of the market community to be at the very least crazy. तो बेसिकली आई थिंक ये पहली लाइन का मतलब है कि ऑफ कोर्स दिस बुक वाज रिटन इन आई गेस 1980s, 80s की बुक है ये. तो बेसिकली इसमें ये बोल रहा है कि उस समय मार्केट को किस तरह से एनालाइज करते थे. बेसिकली 1980s में बेसिकली मार्केट को इस तरह से एनालाइज करते थे कि फंडामेंटल्स को ज़्यादा वैल्यू देते थे. बेसिकली जो ट्रेडिंग रिपोर्ट्स होती है उनको पढ़ना एंड बेस्ड टेकिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन सोली फंडामेंटल और न्यूज़ बेसिकली. ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूँ मैं. As difficult as it is to believe now, it wasn't very long ago when Wall Street and most major funds and financial institutions thought that technical analysis was some form of mystical hocus pocus. तो बेसिकली उस समय लोगों को लगता था कि टेक्निकल एनालिसिस जस्ट काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट वर्थ गिविंग टाइम टू इट. ओके, एंड अभी now of course just the opposite is true. And of course अभी जो most of the time जो traders तुम देखोगे they solely based on technical analysis. Okay, and fundamental analysis को उतनी value नहीं मिलती even though it is really like important. ठीक है, तो almost all experienced trader use some form of technical analysis to help them formulate their trading strategies. मतलब basically अभी के समय most of the traders जो है वो they like किसी ना किसी टाइप का टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता है. इधर इट कैन बी अ इंडिकेटर और इट कैन बी सम काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स. ओके, एंड अगेन उस समय में जब लोग फंडामेंटल एनालिसिस को ज़्यादा
प्रायोरिटी देते थे। आज के समय में फंडामेंटल एनालिसिस लाइक काफ़ी कम लोग करते हैं। यू विल सी लाइक ओनली फ्यू पीपल हु रियली इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन taking trades based on fundamental analysis even though it is important. Okay, तो next paragraph पढ़ता हूँ. I'm sure it is no surprise to anyone that the answer to these questions is very simple: money. The problem the problem with making trading decision from a strictly fundamental perspective is the inherent difficulty of making money consistently using this approach. For those for those of you who may not be familiar with fundamental analysis, let me explain. Fundamental analysis attempts to take into consideration all the variables that could affect the relative balance or imbalance between the supply of and the possible demand of any particular stock, commodity, or financial instrument. Using primary mathematics model that weigh the significance of a variety of factors. The analyst project what the price should be at some point in the future. तो बेसिकली यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्टॉक्स वगैरह को एनालाइज करके पीपल यूज टू ट्रेड विदाउट द टेक्निकल लेवल्स. ओके, तो अगर तुम अभी चार्ट्स में देखोगे तो वी हैव सम काइंड ऑफ पुल बैक जो कि आई डोंट थिंक वो सिग्निफिकेंट इनफ. तो आई थिंक वी विल वेट फॉर लंदन ओपन जो कि 1 बजे 1:30 बजे लंदन ओपन होगा. तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर लंदन ओपन. Okay, at this point, even though a breakout has been happened, we are not going to take trade immediately. We will be just waiting. Okay, so as a matter of fact, many traders, especially those on the floor of the future exchange who have the ability to move price very dramatically in one direction or the other, usually don't have the slight slightest concept of the fundamental supply and demand factor that are supposed to affect the prices. Furthermore, at any given moment, much of their trading activity is promoted by a response to emotional factors that are completely outside the parameters of the fundamental model. In other words, the people who trade and move prices don't always act in a rational manner. तो basically यहाँ पे बात कर रहा है राइटर कि इवन दो उन्हें डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड अपॉन फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, पीपल टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन देयर इमोशंस, एंड जो कि ऑफ कोर्स वी सी दीज डेज एज वेल. Ultimately, the fundamental analyst could find that a prediction about where prices should be at same point in the future is correct. But in the meantime, price movement could be so volatile that it would be very difficult, if not impossible, to stay in the trade in order to realize the objective. तो आई थिंक यहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह से लाइक हमारा एनालिस्ट तो हमें बता रहा है कि ओके आई हैव टू गो बाय, बट करंटली जो प्राइस मूवमेंट होती है उसके कारण जो हमारा मेंटल शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा मेंटल बैलेंस है. एंड इवन दो हमें हमारे एनालिसिस से लाइक स्टिक रहना चाहिए, वी टेक द अपोजिट ट्रेड एंड ऑफ्टन टाइम वी डू लॉस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है द शिफ्ट टू टेक्निकल एनालिसिस. Technical analysis has been around for as long as there have been organized market in the form of exchanges. But the trading community did not accept technical analysis as a viable tool for making money until the late 1970s or 80s. Here's what the technical analyst knew that that took it to mainstream market community generation to catch onto. A finite num A finite number of traders participate in the market on any given day, week, or month. Many of these traders do the same kind of things over and over in their attempt to make money. In other words, individuals develop behavior patterns, and a group of individuals interact the one with one on a consistent basis, form collective behavior patterns. These behavior patterns are observable and quantifiable, and they repeat themselves with stat- statistical re- reliab- with statistical representation. Okay,
So technical analysis is a method that organizes these collective behavior into identifiable patterns that can give a clear indication of when there is a greater probability of one thing happening over another. Basically क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल किस तरह से काम करता है उस पर इंसाइट है. फॉर एग्जांपल जस्ट कंसिडर कि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ एंड मैंने एक पैटर्न बनाया. लेट्स जस्ट सी वो एक फ्लैग पैटर्न है. ओके. तो जब मैं उस पर बिलीव करने लगूंगा तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो बेसिकली लोग हैं जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं वो भी उसे फॉलो करने लगेंगे. एंड इस तरह से एक कलेक्टिव ग्रुप बनता है लोगों का जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने लगता है. एंड दैट इज़ वाई अ पर्टिकुलर पैटर्न इन ट्रेडिंग वर्क्स लाइक अ बुल फ्लैग, लाइक जैसे अ बुल फ्लैग और एक बियर फ्लैग, और लाइक जैसे सम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल. ओके. In contrast, technical analysis not only closes this reality gap but also make available to the trader a virtually unlimited number of possibility to take advantage of the technical approaches open up who has the capacity to put on a trade. Since the market are in constant motion, this money is also constantly flowing, which makes the possibility for success greatly magnified and seemingly within your grasp. I use the word seemingly to make an important distinction between the two group of traders. For those who have learned how to be consistent or have broken through what I call the threshold of consistency, the money is not only within the grasp, they can virtually take it at will. I'm sure that some will find the statement shocking or difficult to believe, but it is true. There are some limitation, but for the most part, money flows into the accounts of these traders with such ease and effortlessness that is literally boggles most people's mind. तो बेसिकली यहाँ वही बात हो रही है कि कैसे डिसिप्लिन ट्रेडर्स जो प्रोबेबिलिटी में बिलीव रखता है, नॉर्मल लोगों के पैसे बेसिकली उनके जेब में जाता है. अब ऑफ कोर्स ये कोट तो तुमने सुना ही होगा कि हाउ द लाइक ट्रेडिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बीइंग पेशेंट, एंड जो इम्पेशेंट होते हैं उनकी मनी बेसिकली तुम्हारे पॉकेट में आ रही है. ठीक है. तो what we are seeing right now, we have closed above this level, we have created some kind of support. If I see a break above this lines right here, I will be interested in taking a buy, and my SL will be on 30-minute ADR value around this level right here. ठीक है. There you go. Okay. तो दिस इज आवर एनालिसिस. मैं कंटिन्यू करता हूँ रीड करना. However, for the traders who have not evolved into the selected group, the word seemingly means exactly what it implies. It seems as if the consistency or an ultimate success they desire is at hand or within their grasp just before it slips away or evaporates before their eyes time and time again. The only thing about trading that is consistent with the group is emotional pain. Yes, they certainly have moment of elation, but it is not a ex- exaggeration to say the most of the time they are in state of fear, anger, frustration, anxiety, disappointment, and betrayal. So what separates these two group of traders? It is intelligence. तो बेसिकली यहाँ पे बताया कि हाउ देयर आर बेसिकली टू ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर हु डू. जो एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर है जो प्रोबेबिलिटी में बिलीव करता है, एंड द अदर फॉर्म ऑफ ट्रेडर आर दोज ट्रेडर who just hope from the market and expect from the market and ended up getting burned time and time and again and again. तो next paragraph है, what separates these two group of traders? It is intelligence. Are the consistent winners just plain smarter than everyone else? Do they work harder? Are they better analysis, or do they have access to better trading system? Do do they possess inherent personality characteristic that make it easier for them to deal with the intense pressure of trading? तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बताइए कि उनको डिफरेंस करती है क्या, बेसिकली क्वेश्चन मार्क है. All of these possibilities
All of these possibilities sounds quite plausible, except when you consider that most of the trading industry failure are also some of the society's brightest and most accomplished people. The largest group the largest group of consistent loser is composed primarily of doctor, lawyer, engineer, scientist, CEO, wealthy retirees and entrepreneurs. बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट में जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल है कहीं ना कहीं वही सबसे ज़्यादा लॉस करता है. Furthermore, most of the industry's best market analysts are the worst trader imaginable. Intelligence and good market analysis can certainly contribute to success, but they are not the defining factor that separates the consistent winners from the consistent losers. Okay, hello, hello, hello. I'm sorry, I was like muted. Hello, hello. आवाज आ रही है? Hello, am I audible now? Hello, hello. Okay, so what we're seeing right now is basically I took this trade because this was a testing support setup. I have risk about 0.5% as we decided on our trade write up. And again, if you're taking this trade, make sure you accept your risk. By accepting your risk, what I mean is कि तुम्हारा जो बैलेंस है, जो तुम्हारा साइकोलॉजिकल बैलेंस है, वो उससे इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. ओके, तो इसको मैनेज करने का तरीका मैं बता देता हूँ, हाउ वी आर विलिंग टू मैनेज दिस ट्रेड. हम इसे दो टाइप में मैनेज करेंगे. बेसिकली इफ़ आई सी अ 15 मिनट बेरिश कैंडल एंड इफ़ आई सी अ वॉल्यूम, यू सी दिस वॉल्यूम कैंडल्स राइट हियर, एंड इफ़ आई सी a bearish candle with the volume being above this moving average right here, I'll close about 50% of the trade, and rest of the trade will just hold until SL happens, or if I see a structure break on 15-minute chart. Okay. Okay, so we are running okay so far. Make sure to follow your rules, okay, if you are taking this trade. We are, I think,
TP is going to happen at this session. I'm not sure. There you go. We are watching 30-minute chart. And this is about 5 pip. Okay, we seems to be going well so far, and I think we are going to have our TP in this candle. Let's just wait and see. Okay, we have about 5 minutes in this candle to close. If I see a bullish close here, I'll close about 50% of this trade at this point, and थोड़ा बहुत हमारा profit book कर लेंगे. It totally depends on the condition. Okay, guys, I think I'm gonna close the full position right here. We have made around 5 pip on this particular trade. I'm closing 90% of the position at this current point. There you go. There you go. I've closed around 90% of the position right here, and the rest, like 0.10% position is running right now. And let's just see how far it will take us. Okay, so this was really simple trade. The reasoning behind this was really simple. Let me just explain it. Okay, so the TP has happened. The reasoning behind it was really simple. Market was bullish on 4 hour on daily. On 4 hour, market was bullish as well. So we were waiting for some kind of structure to break on 30-minute chart. We got a closure above this level right here. We got a closure above this level right here, and we waited for candle to come near our hit zone. We created this kind of support. We start to close above the previous candle high, and we booked around 5 pip on this trade. Okay, so this was a really simple trade we took. Hopefully तुमने भी लिया हो. तो yeah, there you go. Yeah, I think आज हमारा सेशन जल्दी ख़त्म हो गया. I wasn't hoping that. Was hoping to simulate till 3 o'clock. मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ. So this is our 5th winner in the stream. There you go, 5th winner. Okay, we risked about 0.5% on this trade. We could have risked more, but again, हमने जो हमारा एनालिसिस था उसे stick रहा, and we made around 5 easy bip, and we are totally done for the day. And if you are holding right now, you can definitely hold till 161 extension, which is at this point right here. This point right here. मैंने अपनी पोजीशन को 90% क्लोज कर दिया है, एंड लाइक 10% पोजीशन रनिंग है. तो या दिस इज टोटली अ विनर. ओके, तो 1 मिनट बचा है कैंडल ख़त्म होने में.
ओके तो हो सकता है तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया, द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाज वे ऑफ इन दिस ट्रेड, बट वी टुक दिस ट्रेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन आवर सेटअप एज वेल। तो इट डजेंट मैटर अगर तुम्हारा कभी कभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ होता है। व्हाट मैटर इज़ कि तुम्हारा जो विन रेट है, वो ओवरऑल जो तुम्हारा विन रेट है दैट शुड बी हाई। Okay, so that what happened in this trade. We basically took this trade even though the risk to reward ratio was often off in this particular trade. Anyway, seems like I should end the stream. We we started our stream in about prior to 1 hour, या 1 घंटे पहले हमने स्ट्रीम शुरू की, टॉप डाउन एनालिसिस किया, ट्रेड राइटअप किया, उसके बाद बेसिकली हमने कुछ देर रीडिंग सेशन किया, उसके बाद जैसे ही हमें सेटअप दिखा हमने एग्जीक्यूट किया एंड वी बुक्ड अबाउट 5 pip on this particular trade. Okay, I think I'm going to be closing my remaining position. There you go. And I think we had a good day. अब हम सीधा ट्रेड करेंगे यूएस सेशन में। I'll be trading gold, and if I see any good position on gold I'll definitely be trading gold at evening. But right now I think we are done for this particular session. And if you see don't worry Chickpea, we'll be back tomorrow. Of course we stream every day. So yeah, so basically again on gold I'm looking for sell position as well. अगर तुम 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो मार्केट सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ बुलिश, बट वी हैव लाइक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस राइट हियर. तो आई थिंक ऑन 4 hour chart ऑल आई एम डूइंग राइट नाउ इज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल टू क्लोज, एंड अगर उसके बाद कैंडल क्लोज होती है देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेल सेटअप्स ऑन गोल्ड. Okay, on USD chart, what we did, we took a buy and we closed full up position in about 5 pip profit. And yeah, that was all for today. And I think I'm going to be closing stream right now. I'll see you tomorrow at the same time, 12:15. Yeah, that is it.